ओके, चेंज कर लेते हैं। मे बी दिस हेल्प्स अस सॉल्व जो कल दिक्कत आ रही। डोंट थिंक वो होगा, फिर भी चेक करते हैं। डोंट नीड दीज राइट। एक बार RM फिल्टर्ड। अरे लेकिन ये सब काम करना छोड़े ना, हम हमें जो दिक्कत आ रही है हम उसको सॉल्व करें। I need to use the snapshot to create an EC2 volume, but उससे पहले क्या हम एक काम कर सकते हैं? Can we use the EBS direct APIs to interact with the what? The snapshot. बट उसके लिए मुझे परमिशंस देखने, परमिशंस मेरे पास है ना, बट आई हैव दिस, मेरा जो ubuntu VM है। बट इसमें दिक्कत ये है कि आई हैव टू कॉन्फ़िगर इट पहले डिफ़ॉल्ट। मतलब ये मैंने सुबह ही सोचा, क्योंकि आई हैव कॉन्फ़िगर्ड इट डिफ़ॉल्ट में, ये वाले मतलब द Amazon ID I'm logged into. I need to remove this. How do I deconfigure? Can I just do none, 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 and none? Now if I run configure, okay, this is wrong. Can I see कि क्या क्या वॉल्यूम्स हैं, मतलब क्या क्या रनिंग है, क्योंकि इस पे तो मेरा VM रन कर ही रहा है ना, आई कैन सी हियर, बट इट्स नॉट इन Oregon, तो मुझे रीजन भी स्पेसिफाई करना है। तो लिखते हैं I try running AWS EC2 and then help and then list all VMs, ऐसा कुछ। डिस्क्राइब फ्लीट्स, नहीं फ्लीट्स तो नहीं है मेरे पास, वी जस्ट हैव वन VM ना। तो गेट कंसोल आउटपुट नहीं, हेल्प इंपोर्ट इमेज, इंपोर्ट स्नैपशॉट, अब LM छूट गया ऊपर, LI। तो अच्छा, लिस्ट करके कुछ है ही नहीं। हाउ डू आई व्यू ऑल VMs फ्रॉम द CLI? Stop instance, terminate search, run, रिलीज, रिबूट नहीं कर सकते क्योंकि इसी पे तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। तो मॉडिफाई वॉल्यूम मुझे करना है, बिकॉज स्पेस ख़त्म होने की दिक्कत हो जाती है बहुत बार। मॉडिफाई होस्ट, नो, पोर्ट इंपोर्ट, describe regions. Okay, maybe I need to just use describe instance. So just EC2 describe instances. Okay, output is none. ठीक है, मैं आउटपुट पुट जेसन, क्या अब चलेगा? ओह, रीजन भी डिस्क्राइब करना है ना, क्योंकि अभी तो रीजन नन है, तो शुड नॉट गिव मी एनीथिंग। हाँ देखो, EC2 नन हो रहा है। ओके, तो मुझे रीजन
स्पेसिफाई करना है एज AP साउथ एंड 1। क्रेडेंशियल्स गलत है, ठीक है। अरे लेकिन मेरे पास वो नहीं है ना सीक्रेट। डू आई हैव द सीक्रेट? यार एक काम करें, हम क्यों इतनी फालतू नौटंकी कर रहे हैं। वील जस्ट सर्च फॉर AWS, रिमूव डिफॉल्ट फॉल्ट configuration okay, let's just figure गूगल करने देते हैं काम। ओ यार क्या कहते कर रहे हैं हम जस्ट कॉन्फ़िगरेशन ही तो हटा सकते हैं ना वहाँ से। nano dot AWS and what config region is none, output is none। नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे credentials पे जाना है। default is none। if I remove this, no, now what will happen? ठीक है, तो उसको रिमूव करना था, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो ना बट स्टिल आई नाउ आई नीड टू क्रिएट अ न्यू वो ना, तो ठीक है, now I'll go create another set of IAM things or can I use this one? but इसका सीक्रेट नहीं दिखेगा ना मुझे, that's only visible when I first created। yes, yes, I'll create this। check the right path or not। IAM permissions क्यों स्लो चल रही है? I have a key pair in Oregon, I need to remember that। कल जो दिक्कत आ रही थी पर अभी वो सॉल्व नहीं करी है। SS2A, these are the zone names, zone ID। एडमिन एक्सेस जो दे रखा है वैसे वो भी गलती है, बिकॉज एक के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। दैट्स द होल प्रेमिस ऑफ Web3। ये रहा मेक इनएक्टिव। व्हाट एल्स कैन आई डू? ओ आई कैन क्रिएट अ की ना, तो मुझे यूज़र डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है वो, बट अब कंफ्यूजन मुझे ये है, मतलब कंफ्यूजन वैसे है नहीं बट हो सकती है इन द फ्यूचर, इज दिस। आई एम यूजिंग अपने काली बॉक्स पे प्रोफाइल एज फ्लॉज, ठीक है, एंड दिस contains the access keys for the level for the set of क्या set of credentials I found in इस गेम का level 3। एंड अपने अकाउंट में दिस इज माय अकाउंट विच कंटेन्स अ यूजर फ्लॉज, एंड अब मैं इसका परमिशंस मतलब इसके लिए एक वो, मतलब आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग फ्लॉज। ठीक है, तो याद रखनी पड़ेगी ये चीज़।
I can make this, I'll make this inactive first. Deactivate. ठीक. And I can create an access key. Okay. Now if I show this तो ये तो clear text में हो जाएगा, which I do not want. तो एक काम करें, इसको यहाँ पे सेव कर लें क्या? पहले सेव तो कर ही लेते हैं वैसे, बिकॉज वी विल नीड दिस. क्या मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर बना रखा है? नो. तो ठीक है, यहाँ रख दिया. दिस विल हैव ला. I'll close this so that we are safe. And now I'll go here and do an AWS configure and then flaws, profile flaws, paste the access key ID. And now how do I read this? What can I do? full screen करें. जाली नहीं, काली. We need a window capture. Or do I need a full screen capture? I don't know, we'll just see. Okay, I'm not getting it here, which means I will just use this. Does it not work? Okay, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत हो रही है. I need to figure out ये OBS का थोड़ा. And what else? चलो ठीक है, वैसे बाद में तो इनएक्टिव खरीदेंगे हम इसे. ये एक्सेल में खुलेगा इतना लंबा लंबा. एक चीज़ और करी जाए. दिस इज फॉर US वेस्ट 2, है ना, क्योंकि हम इसी में इसको यूज़ करेंगे. फॉर्मेट देने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई हैव फ्लॉज which
has these credentials. And if I go ahead and do this, uh, so AWS G2 is, now I need to set the profile, right? AWS profile flaws, and then EC2 describe instances. This should give me nothing. Okay, तो इसका मतलब ठीक है, this is correct since we just logged into Oregon वाले region में do not have any EC2, तो यहाँ पे भी clear है. But I created a volume yesterday. ठीक है, तो now we'll try to create it using this profile that we just set. We have the region also. So we can set it using AWS, and then profile logs, and to create a volume. So we, okay, what is this? This is visible, right? ये क्या हुआ? Hopefully this doesn't crash my stream. Oh, okay. I think ये full screen पे छोड़ रखा था. That's why this is creating an issue. Is that it? इसको हम साइड में ले लेंगे. Oh, yep. और EC2 में ही वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है ना. So what we can do is move this here, use flAWS profile my account. Okay, cool. Now I'll use EC2 to create volume availability zone की मुझे अभी भी confusion है, but ठीक है, we'll do just as this is telling us to ability zone, क्योंकि आइडिया तो मुझे ज़्यादा है नहीं, तो बेटर होगा कि in order to understand we just follow the hint. रीजन मैंने दे रखा है, तो I should not have to repeat this. Snapshot ID is what we are using here. So instead of copying it here, we just use what we found, so that at least we are doing some method. Just to be sure, I'll check it once. This is 0BC49 and the ending is 89 and बीच में कुछ random letters. ठीक है. Snapshot ID में you need snapshot पहले के, and then snapshot ID is pasted. This should hopefully create a volume which I should see in the URL. ये चीज़ नहीं हो रही थी ना पहले. Now I've created a URL and I need to move to this folder first, and I'll echo this volume that I just created into a note so that we can find this easily. use markdown क्योंकि बहुत easy होता है write करना उसमें. This, and so now I need to see
कि वो वॉल्यूम बना है या नहीं. एंड फॉर दैट आई विल जस्ट मे बी लॉन्च एन इंस्टेंस, क्योंकि कल तो बिना उसके हो नहीं रहा था. आई मीन वी ट्राइड फाइंडिंग इट बट मिला नहीं ना कुछ. ओके, मैक ओएस भी है इसमें. क्या ये फ्री है? नहीं होगा ऑब्वियसली. छोड़ो. RDS we'll use Ubuntu क्योंकि that's what we know and love. मतलब आई थिंक सबको Ubuntu ही पता है लिनक्स में. nobody knows कि Debian या Arch जैसा भी कुछ है. I mean unless you are very into depth लिनक्स पढ़ रहे हो. Or most of the people only know, everybody all I think knows कि Linux is Ubuntu, but it's not actually that. That's just a kernel. We'll use the free tier. नंबर ऑफ इंस्टेंस नहीं चेंज करना. परचेजिंग ऑप्शन नो. नेटवर्क वगैरह का मुझे नहीं छेड़ना. आई थिंक ऐड स्टोरेज एंड हियर आई नीड स्नैपशॉट. यहाँ दिक्कत करनी है ना. डू आई नीड टू ऐड अ फाइल सिस्टम? नहीं, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. You can also attach EBS volumes after creating an instance, but not instance store volumes. इसका क्या मतलब है? I'll add a new volume. SDB ठीक है, को चेंज नहीं करते. And we'll use okay. Snapshot ये, but इस पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. What if I search for the volume I created? यही तो दिक्कत है. How will I find the volume? Now in the console you can create an EC2 in the US West 2 region, and in the storage options, this is the storage options, choose the volume you just created. Where? यहाँ तो can't find. And if I use the original snapshot उससे error आ रही है. ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं यूजिंग द सेम स्नैपशॉट दैट आई जस्ट कल जैसे यूज करा. दिस वन 8-9 से एंडिंग है. ठीक है, चूज दिस. सो नाउ आई शुड हैव टू सिस्टम्स, एक रूट सिस्टम एंड देन एक माउंट में दिखना चाहिए. बोथ शुड बी 8 GB. यार ये मेरे को चार्ज ना करे बस इसका, क्योंकि फ्री टियर के बाहर जा रहा हूँ. बट ठीक है, मैं 2 सेकंड के लिए चलाऊंगा बस, एंड देन आई स्टार्ट शट इट ऑफ. ऐड टैग्स. शिट, पीछे गए. just add a tag y as in flaws level 4 so that I remember to shut this off. Security groups. ठीक है, we'll just use the can stop is yes, yeah, stop भी कर सकते हैं. बट मैंने RDBA में स्टॉप करा था. दैट स्टिल गॉट चार्ज क्योंकि उसका वॉल्यूम स्टोरेज का भी चार्ज लग रहा था ना. तो RDBA में रनिंग का चार्ज नहीं लगा, बट आई स्टिल गॉट चार्ज फॉर यूजिंग द स्टोरेज. तो एंड ऑल्सो क्योंकि मैं उसका रूट वॉल्यूम इसमें यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन मैं अपना अलग से एक स्नैपशॉट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मे बी आई माइट गेट चार्ज. दैट्स वाई डिलीट करना बेटर होगा. एंड I have this. ओके, ये सब कल नहीं आ रहा था, तो आई थिंक थॉट इस बार हो जाएगा. स्नैपशॉट आईडी कैन ओनली बी मॉडिफाइड ऑन EBS डिवाइसेस. क्या मतलब है यार इसका? एक कॉमन एरर लग रही है.
Copy snapshot. Solution which worked for me was to use an AWS recommended device, SDF. ओके, ये दिक्कत है। लॉन्च इंस्टेंस में जाके रिव्यू में गए टू द स्टोरेज ऑप्शन एंड देन it's saying to use F से P. I'll use F and I will review and launch. Open to the world. चलो ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे हम। ओके, हो गया, बस यही था। And you have to see we are in US West 2, है ना? And where is the I would not here. Ah. स्टॉप कहाँ पर है मेरा? ये so I need to log in from here. To be कहीं पे वो दिखाता है ना, the string that I can use to connect to it directly. हाँ ठीक है, वैसे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। Remember the syntax hopefully was SSH, and then I need to use what key? Okay, first I have to go to the folder where I have the keys, use this SSH and then what was it, flAWS, access keys, no, double quote pen, and then this. Nope. क्या दिक्कत है? पब्लिक की I don't know, ये चाहिए कैसे? Nope. Oh, maybe the permissions are not set. How do I check the permissions for this? This is in read. ठीक है, नो गलत का परमिशन देख रहा हूँ ना मैं। दिस इज फॉर ओके, ये दोनों सेम ही तो है यार। विंडोज इसीलिए नहीं पसंद मुझे। हाउ डू आई गेट टू दैट स्क्रीन? कनेक्ट करने के लिए chmod उस पर चलेगा ना? आई डोंट नो, पावरशेल पे चलता है ये, बट ओ अच्छा, पावरशेल पे गेस चलता है। नहीं, दिस विंडोज, बट मुझे वो देखना है ना,
there was a screen where it allows me to connect. पहले इसके पहले है क्या? इज इट हियर? हाँ, मुझे इसको सेलेक्ट करना है एंड देन यूज कनेक्ट, आई थिंक। हाँ, ठीक है, बट मुझे SSH क्लाइंट से करना है तो 5 लॉज। ओ, यूजर स्पेसिफाई करना था क्या? ऐसे फैला फैला के क्यों बता रहा है मुझे? ये जो ch mod वाला है ना, ये सिर्फ उसके लिए है, मतलब लिनक्स के लिए ना। परमिशंस तो सेट ही है इसमें, क्योंकि इफ यू सी हियर दूसरे वाले में cd desktop and then dir what logs दिस ए। अब मुझे ये तो नहीं याद कि इसको कैसे मतलब रीड करते हैं इन पार्शल, बट आई गेस दिस परमिशंस, क्योंकि मैं AWS से डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब AWS इज गिविंग मी, तो होपफुली वो परमिशन सही सेट करके देगा ना। आई एम डाउनलोडिंग इट कहीं और से कॉपी करके, तो फिर मुझे परमिशन सेट करना ज़रूरी है। बट ठीक है, मुझे क्या मिल गया? आई एम हियर ना, दिस इज द VM दैट मैंने खोला है यूजिंग द स्नैपशॉट आई गॉट फ्रॉम दैट लेवल। आई थिंक यही होगा ना। हाउ डू आई चेक? ठीक है, IP डिफरेंट है, बट ठीक है ना, ऐसे कुछ भी तो नहीं दे देगा। बट हाउ कैन आई चेक? कुछ है भी तो नहीं यार इसमें। आई नीड टू फाइंड सम, क्या? हाँ, एन्यूमरेशन के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है ना। हु एम आई, यू नेम। इससे मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं ना। What else can we check? This was used to this, मतलब इसमें nginx भी इंस्टॉल्ड होगा ना, that was the level कि इसका nginx इस पे इंस्टॉल करा एंड देन उसको बैकअप किया, एंड दैट बैकअप का स्नैपशॉट वाज पब्लिक, एंड वो पब्लिक स्नैपशॉट का हमने वॉल्यूम बनाया एंड देन यूज दैट वॉल्यूम टू स्टार्ट दिस EC2 का VM। शुड हैव nginx इंस्टॉल्ड। nginx कैसे यूज करते हैं उसे? find slash type f, I don't know, type f तो ज़रूरी नहीं है, बट nginx नाम से कुछ हो। nginx and then exec ls panel t, do size as well, plus, and we'll put it in vim। denied, ठीक है। तो didn't get anything ना। एक काम और करते हैं, instead of this we'll redirect extra जो भी errors हैं to कुछ नहीं मिल रहा। I need to specify the type, तो मैंने बिना टाइप के कहीं पे देखा नहीं ज़्यादा कमांड्स।
तो कमांड गलत है, छोड़ो। वेयर इज दैट लेवल? नहीं, लेवल 4 खोलना है ना मुझे। डज इट शो कि मैंने कौन सा वॉल्यूम वो मैं यूज़ कर रहा हूँ? मॉनिटर, नो। सिक्योरिटी, स्टोरेज, dev sda, dev sdf, ओके। अटैच्ड, ओ हाँ, मैं माउंट में जाकर चेक कर सकता हूँ बिकॉज मैंने माउंट करा था इसको। तो आई हैव टू ब्राउज दैट, क्योंकि अभी तक तो मैं ओरिजिनल this one I'm browsing this, so instead of this I have to go to this on dev sdf. Can I go to dev sdf या वो सिर्फ उसके लिए है? ed dev, no, ed dev, uh, sdf, sdf, no. How do I see all the volumes? ऐसे दिखता है ना, dev root, dev sda 1, बट ये ऐसे नहीं दिखा रहा। कुछ ब्लॉक स्टोरेज करके होता था ना, lspl के, आई थिंक। Snap, Amazon agent, Snap, 8G, okay. XVDA, XVDF, VDF, virtual disk A, virtual disk F, बट ये स्टोरेज है ना, SDA 1, SDF, पता नहीं, बट 8 GB तो है। लिस्ट माउंटेड स्टोरेज, लिस्ट माउंटेड स्टोरेज, list mounted drives from proc mount df, लिस्ट माउंट पॉइंट। काफ़ी सारी टूल्स हैं यार ये करने के तो। कैट प्रॉक माउंट्स, कैट प्रॉक माउंट्स, अरे बाप रे इतना सारा। डेव लूप, डेव रूट, हाउ डू आई फाइंड कि मैंने जो ये करा है ये कहाँ पर है? देखो हमने वॉल्यूम बनाया है बट स्टिल दिस इज नॉट विजिबल हियर, मतलब आई एम यूजिंग 2 वॉल्यूम्स। आई डोंट नो इसका फिर यूज ही क्या है यहाँ पे। वो ओके, वॉल्यूम्स चेक करने तो पहले तो गलत जगह खोज रहे हैं हम, वॉल्यूम भी नहीं है। ओके, दिस इज डिवाइस नेम,
replace we have mounted blocks and I need to browse AWS browse mounted blocks. After you attach an EBS volume to your instance, this is what I've done. It is exposed as a block device. Okay. You can format the volume with any file system, then mount it. But if I format it, मेरा data चला जाएगा ना. तो मेरे को format नहीं करना. I just need to mount it, I think. After you make the EBS volume available for use, you can access it using the same way any other volume. कैसे करते हैं वो भी. Format तो नहीं करना, ठीक है. LSBLK is what we use to see कि क्या connected है. Now we need to mount. LSBLK नहीं चाहिए इतना डिटेल. ओके. मेरे को फोल्डर बनाना है एंड देन यूज sudo mount. ऐसा ठीक है, ये कर लेते हैं. अरे कहाँ गया मेरा प्रॉम्प्ट. और डेव से बाहर निकल जाओ पहले, तो खतरनाक जगह ये. जस्ट गो टू होम. डोंट हैव एनीथिंग. एक सेकेंड, एक चीज़ और चेक करें. यूज़र में ubuntu होगा. ओके, अगेन हियर. नाउ ls स्टार्ट में डेटा तो नहीं है ना कहीं. we'll use sudo mkdir/data and then we will do sudo mount. We have dev xvdf na lsblk. xdf कहीं दिख नहीं रहा. I think that got replaced by xvdf. हमने क्या देखा था पहले, dev ना, cat नहीं, ls/dev. यहाँ पे xvdf होना चाहिए. हाँ है, बट नॉट sdf या sda. तो माउंट करने के बाद नहीं, माउंट भी नहीं, मतलब इधर कनेक्ट करने के बाद टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है. whatever the case, we will do sudo and then mount and then dev then xvdf to data/data. wrong file system, bad super block, missing code page or helper program or other error. ओहो, फॉर्मेटिंग ज़रूरी है क्या? बट फॉर्मेट कर दिया तो मेरा डेटा नहीं चला जाएगा. The device could be attached to instance with different name specified in the block device mapping. ओके हाँ, ये तो चीज़ हम देख रहे हैं. आई गेस यही रीज़न है. मतलब दिस इज़ व्हाट इज स्टेटेड हियर, बट ऐसा क्यों होता है ये भी नहीं पता. LSBLK to view different नहीं, LSBLK to view available disk devices and their mount points to help you determine the correct device to use. Output of LSBLK removes
the dev prefix to form full device paths, जैसे कि नहीं समझ आया. The following example for nitro system NVMe blocks, ज़्यादा complicated. T2 machine, nope. LSBLK file S. ये सब कमांड चला के देखिए क्या. sudo file /-s and then use dev x vdf boot sector. Is it a Windows something? अगर मैं इस पे A चलाऊं तो सेम. ओके. xvda1. ओके. and xvdf1. चलो भाई ले जल्दी जल्दी करो, नहीं तो पैसे लग जाएंगे. This is the new volume. Should have given it a name also ताकि easily होता, but easily recognize कर पाते. lsblk-f. इस कमांड से क्या होता है? lsblk-f squash fs cloud image 6.3 नो. fs avail नो. इसको माउंट नहीं किया गया ना, तो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही. mkfs.exa. इतने सारे फाइल सिस्टम नॉट फाउंड ना, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे. ऑटोमेटिकली माउंट आफ्टर नहीं, ये तो ऑटोमेटिक के लिए है ना, मुझे तो मैनुअली करना है. तो वी विल जस्ट सी कि यहाँ पे क्या है हिंट में. व्हाट आर वी मिसिंग? Need to mount this extra volume by running lsblk. एक सेकेंड. We need to mount this extra volume by running lsblk से we will see d1. क्योंकि ये b और उसका चक्कर है. Now that we have it at f, तो हम ये करेंगे. This is what we're trying to do now. कुछ एरर आ रही थी, बट what we can do here is, अरे yep. Wait, हाँ. This is the command that we ran first. Sudo ls blk and then f. I don't know, s or f. And then dev and then xvdf.
xvdf1 नहीं sudo lspl के आई वाज यूजिंग f, इन्होंने s यूज करा है। अरे यार ये f और s का मतलब क्या है? uh, uh, we need to mount this extra volume by running lsplk first. lsplk will return the name, जिससे कि हमें पता चलेगा कि what actual device का नाम we need to mount. Now okay, file कमांड यूज करता है ये, भूल गया मैं। file using s and then dev the xvdf 1. So this gives me linux rev ext4 something. Now second, now it says we'll just compare once. So 5 okay, ये कैसे सेम है? यूनिक आईडी, is this using उसका hash to generate it? clouding root fs is same, extents है यहाँ पे, and this needs journal recovery. Maybe this has some error. Now we'll use sudo mount dev xvdf 1 and then /mnt. oh it got माउंट पे चला गया बट डेटा पे क्यों नहीं जा रहा? परमिशंस मिस्टर नीलेश, परमिशंस। वी विल सी डिटेल में एक बार कि डेटा एंड mnt में क्या डिफरेंस है। mnt ये रहा, नहीं, we need to go to / and then do ls minus l here, and then we will see data and mnt here, which I do not see a difference other than the fact that ये 2 और 23 क्या है? This is the number of folders और space, ऐसा कुछ। okay, well काफी नौटंकियों के बाद at least we have mounted it. Basically now what we can do is first visit home, see that Ubuntu is the user and metadata and setup nginx. okay, so cat करेंगे metadata first. I guess these are routes or paths. What about setup nginx, ht password flAWS, and then this is the password. So now we have the password to the nginx server, nginx setup, nginx application. क्या ठीक है? We had to use mnt instead of data. Why? But mnt उसी टाइम बनाया नहीं था, मतलब सॉरी डेटा उस टाइम बनाया था, एंड ये अभी बनाया। इसमें दिक्कत परमिशंस की दिक्कत हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली, बट परमिशंस तो चेक करे, दोनों सेम ही थे, है ना। एक बार फिर से चेक कर लें, एक सेकंड पहले इसे ज़रा हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि
नेटकैट है क्या इधर? दिस हैज SSH बट पब्लिक एक्सेस नहीं है ना HTTP का, तो नेटकैट नहीं चलेगा. वील जस्ट यूज इधर जाके नोट्स में कर देते हैं हम सेव इसे. कैट नहीं, नैनो नोट्स स्नैपशॉट ये रहा. एंड नाउ व्हाट सेटअप है तो थोड़ा ना स्क्रिप्ट ही कर लेते हैं एटलीस्ट. मतलब मुझे तो याद ही है ना नहीं, बट नोट टेकिंग सुधारनी है थोड़ी हमें. तो हम एक काम करते हैं, नहीं ये तो पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा. अभी के लिए जस्ट यही करते हैं कि वी विल कॉपी इट मैनुअली बंदरों की तरह एंड यूज नैनो सेटअप. yes that's right, we are using manual label. A sheet password b setup nginx, paste it in, save this, and we will again do some manual बंदरों का काम and do metadata and use this command to list and copy here and do this. So now we'll have all the files that we got from mounting it. ठीक है? And what I now need to do is switch off the stream, but उससे पहले I will switch off the VM that I just created so that I do not get charged for this in the US West region. I can do terminate. What did he say? चार्ज इंस्टेंस नो मतलब टर्मिनेट कर देते हैं. दे लिखा हुआ ना EBS volumes that do not have delete on termination set to true will persist after this instance is terminated. These volumes may incur an EBS cost per Amazon pricing. To delete volumes associated with the screen, go to volumes. अरे पर volumes तो कितनी बार विजिट करा? He didn't find anything. बस एक बार जरा देख ले कि कैन वी सी एनीथिंग हियर. मे बी दिस इज द न्यू स्क्रीन. हाँ देखो न्यू स्क्रीन टाइप दिख. ये सब EC2 के साथ ही है क्या? अच्छा तो मैं वॉल्यूम मतलब गलत जगह. ओ दिख रहा है ना, देखो कल वाले बनाए हुए दिख रहे हैं सारे यहाँ पे. ये सारे अवेलेबल है. दीज आर इन यूज. ओ नो दिस विल चार्ज मी. ये बंद करो, ये बंद करो, ये भी बंद करो. Why then was I not able to use any of these while creating the VM? हेलो बंद करो इसे. चलो भाई. I don't know how this will affect my billing for AWS, but ठीक है अभी के लिए जरा इसे ना बंद कर देते हैं. Delete all volumes. yes delete. अरे delete नहीं भाई, delete. Now these are all in use, but अभी ये मुझे क्या कह रहा है कि if it's not set to true then it basically delete और termination अगर true है तो it will terminate encrypted. मैं चेक कर सकता हूँ कि है. Okay. Oh, if I terminate I can just maybe stop. Then stopping would be good क्योंकि अगर main ही चला जाएगा तो ये क्या हो. ठीक है मैंने स्टॉप कर दिया इसे. Now
कल देखेंगे इसको फिर से कि व्हाट एल्स टू डू। ठीक है, चलो निकलते हैं अभी, टाटा।